Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 28th of May. The first news is India to get semi-high speed freight trains. Second, China for expansion of 5-nation BRICS. Third, new Arunachal monkey named after mountain pass. We'll see the detail about this. Fourth, RBI warned banks on restructured loan. And the last is an editorial from Indian Express, how to crack the cases. This is with regards to the criminal cases that is operating. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination, do not forget to press a like button. First news of the day, that is India to get semi-high speed freight train. This is important for General Studies paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementation. It is also important for General Studies paper 3, where infrastructure, roadways, railways are concerned. So according to the government sources, India's first semi-high speed freight train is likely to hit the tracks by December this year. So this is what the official confirmation coming from the government of Indian officials. And the semi-high speed freight train will replicate the concept of वंदे भारत ट्रेन जो कि ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है इंडिया में. बेसिकली कुछ प्राइवेट ट्रिपल पी के कॉन्सेप्ट पे भी इसको डेवलप की गई है एंड इट इज़ मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी एंड स्पीड. सो द 16 coaches गति शक्ति दैट कैन clock up to 160 km per hour will be manufactured at Intricate Coach Factory in Chennai. So sometimes in many other competitive examination, they can ask you the name of the factory where it is actually being established. But UPSC will never ask you this question. Now, implementations of PM Gati Shakti initiative. I have already discussed about the PM Gati Shakti. If you don't know, do check it out. यहाँ से भी UPSC आपसे directly PM Gati Shakti पे भी questions पूछ सकती है. So this is kind of a homework that you can do at your end. Now, in order to implement the PM Gati Shakti initiative, it is focused in a manner जहाँ पे railway एक तरह के separate create करेगी directorate of the railway board and the branches and Khurda, Bilaspur, Delhi and Bangalore division to expedite the ambition scheme. So इसकी जो monitoring है, इसकी जो पूरी overall functioning है, उसको और efficient करने के लिए अलग अलग directorate level के railway boards में रखे गए. Now the design work for this train has already been started and the final number of the train will depend upon how the initial one received by the market. तो जो पहली productions की response रहेगी, उसके accordingly government और अपनी productions को boost up करेगी. So what are the facilities that will be there in this train? Each train will have a refrigerator wagons in the rear end and it will help to carry the perishable items like milk products, fish, fruits and vegetables. तो जो interiors of India में या फिर ऐसे जगह हैं जहाँ पे connectivity की issues है, वो इस ट्रेन से सॉल्व होगी. जहाँ पे जो फार्म्स प्रोड्यूस हैं, ऐसे पेरिसेबल आइटम्स हैं जो जल्दी ख़राब होते हैं, उनको मार्केट तक लाया जाएगा. इवन गवर्नमेंट ने कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी स्टार्ट किए लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो आप उस तरह से चीज़ों को उसमें अलाइन भी कर सकते हैं एंड इवन यू कैन यूज द एग्जाम्पल ऑल्सो. नाउ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस विच विल बी देयर इन दिस वैगन कैन बी प्रोवाइडेड विथ ईच कोच एंड द रेस्ट ऑफ द कोचेस विल हैव अ रोलर फॉर मूविंग द कंटेनर्स एंड ईच कोच विल हैव 2 wide doors for loading and unloading the containers because this is the advanced coaches that is being made. तो यहाँ पे कोशिश ये की जाएगी कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा सके. The railway is planning to target e-commerce and courier parcel segment through this train, right? Mostly e-commerce is industry that is boomed in India. Many a times we have seen that even for the delivery partners, the e-commerce, the other giants are coming. तो यहाँ पे जो e-commerce industries है वो बढ़ेगी. इस वजह से जो courier parcel segment है उनको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. Now e-commerce market in India, this is what the anticipation is. So according to the Indian Brand Equity Foundations,
With a turnover of 50 billion in 2020, India has already become the 8th largest market in the world. तो अगर रैंकिंग की बात करें, इंडिया रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में 8 नंबर पे, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ट्रिपल वन से इंक्रीज होगी बाय 2024, $200 billion by 2026 and $350 billion by 2030. So this is what the anticipation is about the growth of e-commerce market, right? So Indian Railway plan to capture a small size of partial shipment by running a dedicated high-speed freight trains. Now, future roadmaps की अगर बात करें, according to the National Rail Plan, the Indian Railways aiming to increase the share of freight transport to 27% to 45%. जो अभी प्रेजेंट में 27% है, इसके contributions को बढ़ाने की बात की गई है by 45%, and this is also envisaged under the National Rail Plan, right? So 2030 तक एक better infrastructure और business development plan करने की बात की है Indian Railways ने, Government of India ने, and even under the National Rail Plan. The Indian Railway has identified 74 new Gati Shakti multimodal cargo terminal जो different locations पे होंगे country पे, with 20 of them in the southern Indian states. जो 74 है उसमें 20 जो है वो South Indian states के लिए dedicated रखे गए. The policy was launched in last year only, 2011 and 2021, in order to boost the investment in development for additional terminal in handling the rail cargos. Now moving to the other news, that is China for expansion for the 5-nation BRICS. Important for General Studies Paper 2, Bilateral Regional Grouping and Agreement, Evolving India's and Affecting India's Interest. So China's government has recently proposed to start the BRICS expansion. Officially, China has confirmed that they would be inclined and looking forward to expand the BRICS, which is currently a 5-member group. So present में Brazil, Russia, India, China, South Africa ये BRICS के members हैं, and the grouping for the first time began the expansion process to include the new developing countries, right? तो China ने कहा है, जो कि इस बार chair भी हैं BRICS के, said that they would be they held a meeting with the BRICS foreign minister and they would be reaching a consensus on the expansion of the BRICS process. So कौन कौन से ऐसे countries हैं जो possibly include किए जा सकते हैं, जिनको invitation भेजी जा सकती है for the BRICS expansion? These countries would be Argentina, Egypt, Indonesia, Kazakhstan, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Senegal, and Thailand. So the Chinese government said that they're looking forward to move with the like-minded partner joining the family of BRICS. So let's see, जब ये meeting conclude होगी तो ये BRICS के और कितने members इसमें जुड़ते हैं. अगर जुड़ते हैं then this would be important for your prelims, possibly next year. Now BRICS countries agrees that it is important to enhance the cooperations with other emerging market. Developing countries further will improve the representation of the BRICS. जो BRICS के representations अभी 5 countries में limited हैं, वो बढ़ेंगी. And even it can make a major international and regional issues more widely heard. Now the aim is to uphold the common interest, development space for emerging market and for the developing countries. Now रशिया ने बैक की है इस डिसीजन के, जो चाइना ने कहा है कि ब्रिक्स प्लस के इनिशिएटिव्स को वो आगे बढ़ाएंगे. So both Russia and China have backed this expansion, seeing the grouping as a useful platform to broaden their voice amid the tension from the Western countries. Argentina, Indonesia, Egypt are among the countries that have previously indicated their interest on joining the group. तो इन countries ने पहले भी अपने interest दिखाई है, but this is a platform that they would be getting officially to join the BRICS, right? So BRICS plus की जो format होगी, that was launched as a way for the 5 countries, and it have to broaden the outreach and basically development जो mutually और countries को benefit करेंगी. The BRICS-led New Development Bank (NDB), which is based in Shanghai, has already been inducted the new members, which include Bangladesh, UAE joining last year, and Egypt or Uruguay has approved with the financial institutions. तो ये कुछ developmental stage में already start हो गई हैं finance level पे, but as a membership की बात करें, full-fledged membership, this process has officially now started amid the China's inclinations towards increasing the BRICS. Now we'll see how many members countries are joining the BRICS plus. Now before I proceed with more other detailed news, I just wanted to share news which is again important for many other competitive examination. This is with regards to International Booker Prize, which was recently announced, and it was backed by an Indian origin, Gitanjali Shri,
for her book that is Tomb of Sand, which was translated by Daisy Rockwell. So these two are the factual one, which is again important for your examination 2022 के द बुकर प्राइजेज हैं. बुकर अवार्ड को बुकर के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज जब ये स्टार्ट की गई थी वे बैक इन 70s, बुकर एक पब्लिकेशन थे जो पब्लिश करती थी बुक. उसके बाद ये ट्रेडिशन कंटिन्यू और फर्दर इट वाज नेम्ड एज अ बुकर प्राइज, राइट. सो ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ऑलरेडी काफ़ी ऐसे इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं जिनको बुकर प्राइज मिल चुकी है पहले भी. सो फॉर यू फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज इंपॉर्टेंट. नेम सबसे पहले ऑथर की गीतांजलि श्री. फॉर विच बुक? द टॉम ऑफ द सैंड, हिंदी में जिसको रेड समाधि भी कहते हैं, और ये ट्रांसलेटेड बाय द डेजी रॉकवेल. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज़. न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास, इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3, कंजर्वेशन, environmental pollution, degradations and EIA. So recently a new species of the world of monkey recorded from Arunachal Pradesh that has been named as a strategic mountain, जो कि almost 13,700 feet above sea level पे. You can see this is a variety, you can say the species that was found. Sela Macau नाम दिया गया इसको. Sela as a place where geographical location काफ़ी important, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में. So the new to the science primate was identified as analyzed by the team of experts from the Geological Survey of India and University of Calcutta. The study has been published in the latest edition of Molecular Phylogenetics Evolution. फाइलोजेनेटिक्स इवोल्यूशंस का मतलब होता है जो इवोल्यूशनरी किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में होती है, उसकी कैसी इवोल्यूशंस हुई, उसकी स्टडी फाइलोजेनेटिक्स में करते हैं. नाउ यू कैन सी द सेला पास, अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इससे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं. ऑलरेडी फॉर दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बिन सेट बाय द यूपीएससी. क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं यूपीएससी में. तो आप इस बार ये देख सकते हैं सेला पास यहाँ पे. अरुणाचल प्रदेश इज़ द एरिया, दिस इज़ द भूटान, गुवाहाटी रीजन, असम. तो ये स्टेट्स और किस तरह से इनकी फ्लो है ईटानगर की तरफ, दीज आर समथिंग दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन वर्क. नाउ you must have heard about the Sela Pass tunnel, which is there in the news. It is basically in Arunachal Pradesh, constructed by BRO, that is Border Road Organizations. This is Border Road Organization that is developing this. Length है 12 kilometer के आसपास. Construction using the new Australian tunnel method, and it will be the longest bi-lane road tunnel that in the world, altitude of 13,000 feet. And there's some other details like critical for the army movement. It will provide all-weather connectivity for Tawang to other states, and it will reduce the trafficking from Tezpur to Tawang. That will move an hour to boost tourism and other economic activities. So this is a map. You can pause this video and you can just check the details how it will reduce the time. It is for all-weather access, and it is critical that this development will definitely help our paramilitary forces and the military forces. Now, phylogenetic analysis, अगर मंकी की बात करें, this analysis was done for to study the, पहले समझते हैं phylogenetic study होती क्या है. phylogenetic analysis का मतलब होता है, phylogenetic analysis का मतलब होता है, this is a study of evolutionary development for a species or a group of organism for particular character of an organism, right. तो phylogenetic जो analysis की गई उसमें रिवील किया गया जो सेला मकाऊ है was geographically separated from Arunachal Pradesh, Tawang district by Sela, and the mountain pass has acted as a barrier by restricting the migration of the individual with the two species approximately 2 million years. This was the study that was found. And the Sela is a study, this was situated between the Durang and Tawang town in the western Arunachal Pradesh. तो ये कुछ लोकेशंस को इंपॉर्टेंस को देखते हुए वहाँ पे नाम रखी गई और इसी नाम से वापस में मंकी जो खास करके मकाऊ है उसको नेम की गई. Now, something about the Sela macaw. The study described that this is genetically closer to the Arunachal macaw, which has been a physical character, a heavy built होती है, a long dorsal body होती है. The geological identified some distinct morphological trait different to the other two species. And the Sela macaw has been a pale face, brown coated. You can see the face over here. This is brownly coated, right? And that has a dark face and the brown coat. So दोनों में difference ये है कि उसकी पेल फेस होती है, इसकी डार्क फेस है. अदर वन इज ब्राउन कोटेड एंड दिस वन इज ऑल्सो डार्क ब्राउन कोटेड. The major causes for crop loss, this is what the villager has been claiming, that the Sela macaw is a major
cause for the crop loss in the western Kimeng district of अरुणाचल प्रदेश. So कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में. Now RBI warned bank on restructure loan, something important for General Studies paper 3, Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. RBI ने अपने लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में ये क्वेश्चन किया है लेंडर्स को दैट टू बी जो एडवांसेस पेंडिंग है रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के कोविड-19 के बाद से जो चीज़ें पहले से भी हैं और उसके बाद भी चीज़ें हुई हैं, दे नीड टू स्पेशली टेक केयर ऑफ रिकवरिंग ऑफ देम एंड स्पेशली रिकवर फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट. क्या रिपोर्ट में और डिटेल कही गई है? द आरबीआई हैव ऑब्जर्व दैट इज एनुअल रिपोर्ट एंड सेड दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज विटनेस्ड द improved financial parameter despite the COVID-19 pandemic. However, it need a watchful credit behavior to restructure the advancement and possibly increase the slippage arising for the sector relatively for more exposure of the pandemic. Now, going forward, an economy recover the credit demand, rising bank and need to focus upon the supporting credit system while vigilant in evoking the risk also. So, these are some of the important highlights that were reflected in the RBI report. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की गई है NARC. सो दिस रीस्ट्रक्चरिंग विल हेल्प टू रिजॉल्व द लार्ज वैल्यू ऑफ लेगेसी स्ट्रेस्ड एसेट्स. टाइमली एफिशिएंट मैनर पे इसकी रिजोल्यूशन की जाएगी ताकि जो मार्केट में वैसे वैल्यू के NPA बने हुए उनकी रिजोल्यूशन की जा सके. द RBI इज ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू विद द कमिटमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म ट्रांसपेरेंसी दैट वुड हेल्प टू मेक द एक्सरसाइज कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव. Now recovery underway है. Reserve Bank of India अपने annual report में कहा है further for the path of growth something would be required like addressing the supply side bottleneck, calibrating monetary policy to bring inflation within the target, and targeting inflation policy support to aggregate demand, especially for boosting the capital spending. So this is how the recovery process will go forward, and even we can expect the restructuring on a better manner. Now moving to the editorial, how to crack the cases. This is important for General Studies paper 2, structure, organization and function of executive and judiciary. So I'll be simplifying this editorial under 6 important subheads, that is about the forensic science, facets of the forensic science, forensic science laboratories क्या क्या कहाँ हैं इंडिया में, क्या कंसर्न रेज की गए हैं, मैन पावर की शॉर्टेज forensic science laboratories में और वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है. So this editorial focuses upon the forensic science and the criminal justice system in India. Forensic science की बात करें, they have gained cultural popularity over the past 2 decades with the onset of crime shows and televisions that we are seeing. बहुत सारे ऐसे programs हैं जो आई हैं OTT platforms पे भी. तो उसके बाद लोगों का जो forensic science में जो दिलचस्पी है द इंटरेस्ट, द क्यूरियोसिटी हैज अराइजन इन टर्म्स ऑफ दिस. सो दे आर सीरियस बिल्ड अराउंड द crimes that has been solved by the police and investigation agency by the help of the forensic science. But the point is, how efficient is the forensic science in India? क्या क्या इसमें खामियां हैं, अभी क्या क्या कमी है और गवर्नमेंट को कहाँ पे काम करने की जरूरत है. So you can expect a question on mains examination with regard to this. Now about the forensic science is an application for scientific perspective जहाँ पे legal process involved होते हैं including the investigation and courtroom protocols. It is accurate to see जहाँ पे scientific data utilize की जाती हैं for the procedures and especially to encounter the legal system, right? And forensic science relies on the same values, methodology used by the other members and scientific community. So it play a very significant role to solve any criminal problems or beat any problem that call for a forensic science expert. There's a rigorous proceeding involved, including the controlled conditions, reliable data collection, and attempt to disprove hypothesis. एक recent में अगर shows की बात करें, वे बैक बहुत पुरानी show है जो कि CID के नाम से जानी जाती है. उसमें forensic science के बारे में क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है. बट अभी जो वेब सीरीज आए हैं OTT प्लेटफॉर्म में, इसने लोगों को और ज़्यादा अवेयर किया. बट इंडिया में जो फंक्शनिंग है फॉरेंसिक साइंस की, उसकी रियलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं. फेसेट्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस की अगर बात करें, सो सम मेथडोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड इज ऑटोप्सी प्रोसीजर्स, फिंगरप्रिंटिंग, टेस्टिंग, मैचिंग ऑफ पॉइजन्स, ब्लड सेपरेटर एनालिसिस, मैचिंग गन्स टू द बुलेट फायर और वीडियो सैंपल मैचेस, हैंड राइटिंग असेसमेंट और DNA एनालिसिस. ये कुछ इंपॉर्टेंट फेसेट्स हैं इंडिया में फॉरेंसिक साइंसेस के.
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की अगर बात करें, इंडिया में जो डिस्पैरिटी है पुलिस, सिटीजन और जज की रेशियो में वो काफ़ी ज़्यादा है. दैट सेम लाइज टू द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज. द कंट्री डू नॉट हैव एन एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज. अगर बात करें इंडिया में सिर्फ 7 लेबोरेटरीज हैं. दे आर बेस्ड इन हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे. और दिल्ली में भी लेबोरेटरीज हैं, बट वो जो लेबोरेटरी है वो अंडर कंट्रोल ऑफ CBI, राइट. Now, 6 of laboratories bearing Delhi as under the control of Director of the Forensic Science Services, DFS जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर काम करती है. बाकी जो और चीज़ हैं वो रीजनल बेसिस पे काम करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाया गांधीनगर गुजरात में, और एक अलग सेंटर्स भी बनाई गई है दिल्ली में जिसका नाम रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड forensic sciences. So it was integrated with the new universities, and this is a step in the right direction. We need more universities in terms of forensic sciences that will help to get the pending cases done at the earliest. So there are 32 forensic science laboratories in the states, और अगर बात करें 529 मोबाइल FSL हैं, और बाकी दिल्ली में एक ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे टोटल 6 मोबाइल यूनिट्स बनाए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द बर्डन ऑफ द केसेस. Now some concern, जब DNA टेस्ट की बात करें वे बैक इन 1985, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन क्राइम वाज इन्वॉल्व. हिंदू की एक रिपोर्ट है जहाँ पे ये कहा गया कि यूनाइटेड किंगडम अपने एक साल में 60,000 केसेस को एनुअली सॉल्व करती है, बट इंडिया में ये नंबर इज ओनली 7,500. और एवरेज पेंडेंसी केस इंडिया में काफ़ी हाई हैं. सम शॉर्टेज आर काउज ड्यू टू लैक ऑफ लेबोरेटरीज एंड दैट काउज ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट क्वालिफाइड पर्सनल. तो मैन पावर की भी शॉर्टेज जो है वो काफ़ी अहम है. इफ़ यू राइटिंग इन मेंस पेपर, आप मैन पावर की जो शॉर्टेजेस है वो ज़रूर हाईलाइट करें. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट स्पीडी ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि जितने सेंटर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं उनमें मैन पावर की जो क्रंच है उनको फुलफिल किया जाए. एंड सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया दैट 97 पोस्ट ऑफ द साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड 67 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है अभी भी खाली हैं, और अदर स्टेट फैसिलिटीज़ वर लैकिंग विद द स्टाफिंग प्रॉब्लम्स, राइट. In all the states, 50% of the seats are vacant in terms of their personnel, and the court has asked the central government to address the situation at the earliest. The court has recognized the lack of personnel mean by open trial that was delayed due to the non-receipt of the FSL reports. Now, how to conclude this type of sensitive topic? So, first you need to give a positive note that the key to improved criminal justice system in the quality forensic lab is to have a well-trained staff, not more legislation and harsher punishment, right? This is despite the need for the good quality training facilities, standard of accreditations that will continue for education program in our forensic expert. तो यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेंशन भी ज़रूरी है. मैन पावर क्रंच जो है उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें खास करके जो पनिशमेंट है उसको और स्ट्रिकल करने की ज़रूरत है, सो दैट any other individual who is involved in crime should take that as a precedent and should not be doing that, right? So this is how the way forward can be concluded. Moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of your study question. For first question, the correct option is B. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice. World Sustainable Development Summit के बारे में आपको बताना है. It's an annual summit organized by Greenpeace. The theme of the summit is redefining our future safe environment for all. So do check it out for the correct option. Second, Shramik. It's a dynamic portal for the job mapping Shramik for MSME and other industries in the country. The portal use algorithm for artificial intelligence and provide analysis for the skill training program for the Shramik. So do check it out, which among the following is the correct options. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.